Okay, okay, great. So now we are gradually and steadily approaching for the D-Day, that is the CAT examination and other examination. And I suppose that you must have filled the CAT examination form because the date was extended also, and this is now over, right? So I suggest that now start a serious preparation, revise your concepts, revise your content, solve the questions regularly, and memorize the formulae and the calculation tips and tricks, right? So that you can have a say, good speed in the examination by solving the question paper. And when you're solving the question paper, so I suggest that try to avoid the calculator which is available in the examination. Because see, when you're going for the calculator, so there is a shift in the window and there will be some time consumption. And with this time consumption, your speed will slow down, right? So for us, a good cutoff, good score, I suggest that try to avoid the calculator. So for this, there are some tips, there are some tricks, and uh, we are having a say some logics, right? I say the logic for solving the questions, and this logic can be developed by repetitive revision, right? So I suggest that please make us say every 10th or the 15th day of your preparation for the revision purpose. That is in a month, you should try to have a 3 to 2 days, 3 to 4 days solely for revision purpose. Nothing for else, right? Only for the revision purpose. Okay, so was the session objective for this today to score some marks in the quantitative section, right? And in this section, we are scoring some marks and how to score these some marks. So this we will be learning here in this today's session. But yes, when you're solving the section, any section, this is not only for the quantitative section, for any section or any other examination, I suggest that the relaxed state of mind will do the miracles, right? So if you keep yourself calm and cool during the examination, particularly inside the examination hall, then you will be having a say good chances of scoring good marks. Why? Because you will be able to solve more number of questions accurately and precisely, right? Okay. So moving further, so how to apply this relaxed state of mind and how to solve the question paper and what are the tips and tricks. So just moving further, right? So first of all, we will learn some methods, right? And we will apply these methods to solve the previous examination question, right? So we say, okay, the exam was tough, exam was having a this much of tough logic, right? Nothing. So basically, if I understand the basic fundamentals, I can easily solve the questions, right? Okay. So first understand this mindset, right? The mindset of the examiner, right? So in this, one person who is called as the examiner is taking around 3 to 4 hours to design a one particular good question, right? Now, when he has designed this question, he is taking hardly 30 to 40 seconds to design 4 or 5 options. So what do you say? Is this beneficial for you or is this harmful for you? Right? I take this as a benefit, right? Because if a person is just taking hardly 30 to 40 seconds to put a some 4 or 5 option, so there must be a say some flaw, there must be a say some clue for the hint because the person is not checking properly, right? And we should use this mindset to solve the question or the question paper, right? Okay. So how to approach this? So first learning for this today's session. First commandment for this today's session.
All questions are equally tough for me. So if tough for me, for you also, for any other person also, right? So the toughness or easiness is similar for everyone, right? What to do now? I will read all of them, right? So starting from the first to the last question, read all the questions. Nobody knows. Maybe the last question, right? Maybe the last question will change the entire game, right? So this is just like the any cricket match. Even the last ball can decide the win or lose, right? So the same thing is here. The last question can decide win or lose. Okay. Now, along with the question, what to do? Just read options also, right? What we normally do, we read the question, we start solving the question, writing on the formulae, putting up the values, do the calculation, everything, but we ignore the options, right? So first thing is what? Read the question along with the option, right? Okay. Okay. So moving this further, yeah. So this is a warming up question for the session for this today, right? So this says AB multiplied CD. So these are the two-digit numbers, right? AB and CD, and both are multiplied equal to 1073. So this is the one linear equation, right? Second is BA multiplied with CD, right? And this is the second linear equation equal to what? 2117, right? Find the value of AB plus CD given that AB, BA and CD are all two-digit positive integers, right? So there are two linear equations, each one with a two variable, and we have to find the value of AB plus CD, right? And you have the four options to pick the best possible option out of the given options, right? So tell me, maybe you can discuss your logic, you can give me any option which you think is the best one for this question, right? So you're having all the opportunities, all the options, all the choices to solve, right? And give your answer in the chat box, right? If you're getting us some option. And if not, if you're having only the logic, then you can just unmute yourself, you can just raise yourself, hand raise, and then you can discuss, right? What can be the logic? What can be the possible way of solving this question, right? And see, this is a previous examination question which is from linear equation, algebra, right? Okay. So yes, I'm waiting for the responses from different persons. Okay, so getting us say one answer here. Okay, okay. So now you are getting warmed up for solving the questions. Yes. Okay. Okay. Now more responses are flooding in. Yes. Quickly. Okay. So see this. Now listen carefully. These are the linear equation, right? And in linear equation, we have two methods. One is a substitution method, where we take the value from one equation, substitute in the other, right? And then simplify and solve and getting the answer. Second method is elimination method, where we are eliminating the common variable and then solving for the remaining variable and getting the answer, right? So whatever the way I can take will be taking a little more calculation, little more time for solving this, right? But in the examination, there are two major factors. One is the speed, how fast you are solving, and second, the accuracy, how accurately you are solving, right? So I should keep in mind these two factors, the speed and the accuracy, right? So there should be no compromise with the speed and there should be no compromise with the accuracy, and still I should get my answers, right? Okay, so see this. In this example, the first equation, this is AB multiplied CD is 1073, right?
So there are two variable A, B and C, D multiplied and getting the answer is 107, which is I can conclude is nothing but odd answer, right? Now if you're getting an odd answer multiplying the two variables, so with this I can conclude that AB should be odd, right? And CD should be odd, right? Because multiplying two odd numbers will be giving me the odd values, right? So this is the first one. No calculation, this is the sum basic fundamental, right? Coming to the second equation, the same principle applicable here. 2117 is what? This is odd, right? And BA and CD should be what? Odd, right? So this is odd number and this is also odd number because multiplying two odd will give me the odd answer. Done. So this I can easily do because this is a very simple part, right? I need to find the value of AB and CD. So now I have concluded that AB is what? My odd number, right? And CD is what? My odd number. Right? Earlier you were multiplying, right? And now what you're doing? You are adding. So adding two odd number will always give you the even answer. And with this, I can easily conclude that yes, this is my first option should be the correct, right? So see, we are talking about the shortcuts, the faster way of solving the question, right? And see, these shortcuts or the faster way of solving the questions are what? Dependent on the individual questions, right? Suppose you say, okay, if there is a one more option which is having an even value, then what to do? How can I get this? Right. So with this method, you can even eliminate the two option and just concluding that out of the two option, one is correct. Right. Now you need to little bit break down the numbers. Done. So 1073 and 2117, if you're breaking it down, so can you give me some numbers? What are the factors of these numbers? What are the factors of these numbers? If I break the 1073 in two-digit number, right? So what are the two numbers? 1073. Can you tell me? Yes, quickly, quickly, give me some number. If I break down 1073 in a two-digit number, yes, Dhimay, yes. So 1073, if broken down, right? So this is 1073 is nothing but what? 29 into 37. And see the other number, this is saying BA. One is a AB, other is a BA, right? Multiplied CD. So 2117 is nothing but what? 29 with 70, right? So this way I can break down and get my answer, right? So this is the reason I am saying just work over your calculation. Only one person is there, Dhimai, who has given me the breakup, the factors of this number, right? So calculations are very important for getting the result, for getting the final answer, right? Okay. So moving further, now coming for us is some more part, then we'll come back over this. Okay, come to this permutation part. Five letters to be posted in three letter boxes. In how many ways this can be done? Five letters to be posted in three letter boxes. In how many ways this can be done? Okay, so I am getting one answer as
125. Okay. So Hardik is saying 125. Okay. Ramya is saying 5P3. Okay. Others, tell me some answer. Okay. Money is also saying 125. Okay. So hello, Money. Can you unmute yourself and explain how is 125? Hello. Okay. Hello, Ramya. Can you unmute yourself? Hello. Yes, sir. Hello, So sir. how is Can you this hear your me? hello? Yes, yes, yes. How is your answer? 5P3? Sir, according to permutation, it can be like five letters to be five letters to be posted in three letter boxes in three ways. Like so, Mm-hmm. 5p3, 5 factorial divided by 5 minus 3 factorial. Okay. So first tell me why are you taking P, the permutation, not the C combination? How can you decide that in this question we should apply the permutation, not the combination? Okay. Sir, sorry, sir. Mm-hmm. Actually, in this order is not possible. So maybe we can't fix the order. So it will be 5c3, not 5p3. Okay. So now you're saying that P is not the correct Ah, one. I should say the yes, sir, C. yes, sir. Yes, Okay. sir, yes. Okay. Okay. Hello, Hardik. How is your answer? The 125? Sir, actually, there's no such condition that we have five letters and three boxes. So I write three boxes and five into five into five. That's how I got five cube. Okay. 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 Uh, hello, Kushal. Yes, sir. So you're saying combination, right? Yes, sir. So, I'm saying 5C3. okay, why is 5C3? Sir, because I think they are asking five letters to be posted in three letter box. They are not asking that it should be in a relevant order or in a Okay. fixed order, and it is asking in how many ways this can be done. Okay. So I think that's the reason for uh, giving the answer 5C3. Okay. So you're saying that because order is not important, so we should use the combination. Yes, sir. Okay. So Kushal, tell me one thing. Suppose you are celebrating your birthday, okay, Yes, sir. right? And you have a five Cadbury chocolates with you, O- okay. okay? And there are three of your friends, Okay. okay? And your friends are asking for munch, Uh, okay? okay. Just see the complete picture. I am repeating. You are celebrating your birthday and you have a five Cadbury chocolates. There are three of your friends and your friends are asking for munch. So tell me Uh, one thing. Out of the five Cadbury chocolates, how can you distribute three munch to your friend? sir, not possible because I don't have munch. So Kushagra, here, what is five? Five letters. Okay. Okay. And what is three? Letter Letter boxes. boxes. Right. Acha, yes, sir. These two are the different Yes, variables. yes, Right. sir. One is like Cadbury chocolate, other is like punch. So Punch. I cannot relate them. Right. So Mm. any answer, if you people are telling me for five
5P3, 5C3, that is permutation, combination, all these are not correct. Okay? So this is a like a type of a trick question. Yes, right. Yes, So sir. in this, because see, we are saying, okay, five letters, three letter boxes. I need to put the letters in different boxes. So I should apply maybe the C, maybe the P, and then I am getting my answer, right? So Yes. in this question, you are not applying either the permutation or the combination. Okay, Yes, because sir. there are two different variables. And if I saying that I am putting up permutation or combination, so what is this? 5P3 representing what? Out of a five things, you are selecting and arranging three things, Hmm. right? But out of the five letters, how can you select the three letter boxes? Yes, sir. Not possible, right? Yes, sir. Not possible. Okay. So now, what to do and how to solve? For So solving why any not 5C3 then? Sir 5P3 तो समझ गए सर 5C3 एक बार फिर से बताइए. same region, C is what? Simple selection, right? So if you are saying if 5C3, so out of a five things, you are selecting three things. And if these two are the different variable, you cannot select, Sir, right? sir, if it is like we are just giving five letters to distributing in three letter boxes, Mhm. so we Same can. thing. Postage, distribution, whatever is this, right? This is a different synonyms, right? But I am talking about the variable, the objects with which you are working, the letters and the letter boxes. Right? You can say five letters to be posted. You can say five letters to be distributed. You can say five letters to be divided. Right? You can say five letters to be spread out. Whatever. All these are the similar synonyms for one thing, that is, you are doing a five letters in three different letter boxes. Right? Because these two are the variable where you are working. जिसके साथ आप वर्क कर रहे हो, जो वेरिएबल है वो अलग अलग है, वो डिफरेंट वेरिएबल, राइट? तो आई कैन नॉट रिलेट। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि आप कैडबरी चॉकलेट से मंच को सेलेक्ट नहीं कर सकते, है ना? अब उसमें चाहे सेलेक्ट करना है या सेलेक्ट करके अरेंज करना है, कॉम्बिनेशन करना है या परम्यूटेशन करना है, उसमें से कुछ भी नहीं हो सकता है ना? बिकॉज एक कैडबरी है, दूसरा मंच है, डन? तो दोनों ही वेरिएबल अलग अलग है। ओके, अब क्या करें? सबसे पहले परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन में आपको क्या करना है? आपको ये देखना है कि व्हाट इज योर जॉब, व्हाट इज योर टास्क विच यू आर सपोज्ड टू कंप्लीट। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में ऐसा क्या जॉब, ऐसा क्या टास्क है जो आपको कंप्लीट करना है? और यहाँ पे क्या करना है? पोस्टिंग ऑफ लेटर्स, राइट? दिस इज योर टास्क। व्हाट टू डू? पोस्टिंग ऑफ लेटर्स। हाउ मेनी लेटर्स? Five letters, right? So 1, 2, 3, 4, 5. These are the five jobs, five tasks which you have to finish, right? That is posting of five letters. First letter can be posted in how many ways? Three ways. In any letter box, you can post the first letter. So this first letter can be finished in what? Three ways, right? Second letter can be done in how many ways? Again, three ways. जिस लेटर बॉक्स में आपने पहले वाला लेटर पोस्ट कर दिया है, उसमें हम दूसरा भी कर सकते हैं, है ना? देयर इज नो कंपल्शन कि आपको डिफरेंट डिफरेंट लेटर बॉक्स में ही करना है, राइट? सो फर्स्ट लेटर कैन बी पोस्टेड इन थ्री वेज, even second letter can be posted in three ways, then the third letter, what? Three ways. Next letter, three ways. Next letter, three ways, right?
So every letter can be posted in how many? 3 ways. अब क्या करना है? All these numbers should be what? Multiplied. Right? Now you can ask why to multiply? Why not to add? हम मल्टीप्लाई ही क्यों कर रहे हैं, हम एडिशन क्यों नहीं कर रहे हैं, है ना? सो द आंसर इज, जब भी हम जॉब्स या टास्क कॉम्पिटिशन कॉम्बिनेशन में कंप्लीट करते हैं, तो अगर मेरे जो जॉब या टास्क है वो 1 by 1 है, एक के बाद एक है, पहले एक जॉब कंप्लीट किया, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा किया, फिर चौथा किया, है ना? तो हम क्या करते हैं, हम अपने टास्क को, अपने नंबर ऑफ डेज को मल्टीप्लाई करते हैं, राइट? तो यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, आपने पहले फर्स्ट लेटर को पोस्ट कर दिया, डन, फिनिश। फिर सेकेंड लेटर को पोस्ट किया, वो भी काम कंप्लीट हो गया। फिर थर्ड लेटर को पोस्ट किया, वो भी कंप्लीट हो गया, है ना? तो हम क्या कर रहे हैं, एक एक जॉब को अपने हाथ में ले रहे हैं और उसको कंप्लीट कर रहे हैं, राइट? एंड एवरी जॉब कैन बी डन इन हाउ मेनी? 3 ways। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ वेज मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज एक एक जॉब कंप्लीट होता चला जा रहा है। डन। नाउ अब एडिशन कब करेंगे? एडिशन हम करते हैं जब मेरे पास में मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैं आपको कहता हूं कि आप या तो आइसक्रीम ले लो या चॉकलेट ले लो, है ना? मैंने बोला कि देखो, 3 टाइप्स की तो आइसक्रीम है, डन, और 5 टाइप्स की चॉकलेट है। अब बताओ आप क्या करोगे? और एक ही चीज मिलेगी, या तो आइसक्रीम ले लो या चॉकलेट, है ना? तो कितने तरीके से ले सकते हो? तो हम क्या करेंगे, वी विल ऐड, है ना? तो 3 आइसक्रीम, 5 चॉकलेट, टोटल कितने तरीके से वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं? 8 वेज, है ना? तो जब चॉइस होगा तो हम ऐड करेंगे, ठीक है? और जब हम टास्क को कंप्लीट करते चले जाएंगे तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे तो हमने टास्क को कंप्लीट कर दिया, तो ये क्या आ गया आपका, दिस इज 3 raised to power 5, and which is nothing but 240. Okay? So 5 letters to be posted in 3 letter boxes, this can be done in 243 ways, right? I suppose now this is clear for everyone. Excuse Okay. me, sir. Sir, with and we multiply. Sorry, with and with we multiply, and with or we add. Yes. And तो sir, अभी मैंने 5. यहाँ पे एंड लिया नहीं है ना? मैंने टेक्निकली वर्ड्स को यूज नहीं किया, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग इनटू द परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का सेशन, है ना? बट हाँ, एंड जब लेते हैं तो मल्टीप्लाई, एंड और लेते हैं तो, बिकॉज और में चॉइस आ गया और एंड में स्टेप्स आ गए। And sir, 5p3 and 5c3 से नहीं, क्योंकि letters and letter boxes अलग वेरिएबल है, अलग अलग वेरिएबल है, अलग ना? वेरिएबल में कभी पीएनसी नहीं यूज होता है। नहीं, उसमें कैसे आप मिक्सअप कर दोगे? अलग अलग चीजों को तो मिक्सअप नहीं कर सकते ना। अब इसमें ये तो हो गया, देखो, कंसेप्चुअल तरीका। अब इसको अगर हम अपना जनरल टर्म में अपना अगर शॉर्टकट बनाए तो हम क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पे देखो, लेटर बॉक्सेस है ना, ये एक वेरिएबल। अब लेटर बॉक्सेस क्या होते हैं कि डिफरेंट सिटीज में ना वो कहीं ना कहीं फिक्स होते हैं, एक जगह पे फिक्स होते हैं। जैसे रेलवे स्टेशन है, या कोई सेंट्रल मार्केट है, या कोई बहुत ही प्रोमिनेंट लोकेशन है सिटी का, तो वहां पे फिक्स होते हैं, जैसे सभी लोग वहां पे अप्रोच कर पाए। डन। तो आई टेक दिस इज व्हाट, फिक्स, है ना? अब लेटर्स हैं, सपोज आप रेलवे स्टेशन जा रहे हो, आपने रेलवे स्टेशन पे पोस्ट कर दी, डजंट मैटर कहाँ पे पोस्ट कर रहे हैं, वो तो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा, है ना? आपके फादर हैं, वो सपोज एयरपोर्ट जा रहे हैं, उन्होंने एयरपोर्ट पे पोस्ट कर दिया, है ना? तो इसको हम ले लेते हैं वेरिएबल। वेरिएबल इन द सेंस कि अलग कहीं भी लेके जा सकते हैं लेटर्स को, लेटर बॉक्सेस को तो नहीं लेके जा सकते, वो तो कहीं फिक्स है, राइट? तो आपका जो आंसर फॉर्मेट होगा वो क्या होगा, दिस विल बी फिक्स इज इन द बेस, है ना? फिक्स जो नंबर है वो बेस में आएगा, और जो वेरिएबल नंबर है वो आपका पावर,
और अगर आप इस लॉजिक से सॉल्व कर रहे हैं तो आपका आंसर हमेशा सही होगा। राइट हार्दिक? तो आपका ये जो आंसर है 125 है ना, ये आपका रिवर्स ऑर्डर में था, तो इसलिए ये आंसर रॉन्ग है। ओके, राइट? सो दिस इज द वे वी आर सॉल्विंग। और ये देखो, ये तभी आएगा जब आप क्वेश्चंस को मल्टीपल टाइम्स सॉल्व करेंगे, अपने क्वेश्चन पेपर्स को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करेंगे, तो ये सारी चीजें जो है डेवलप होती हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार सॉल्व किया मेरे को सारे शॉर्टकट्स आ गए, सारे तरीके आ गए, राइट? दिस इज द रीजन आई एम सेइंग कि यू शुड रिवाइज रेगुलरली एंड स्टार्ट डूइंग द टेस्ट। ओके, नाउ moving further. Okay, coming to the more algebra part. Yes, tell me this. Find the maximum value of modulus 30 plus 9x minus 3x square modulus close, where the x is ranging from -1 to 4. And you have the four options 1, 2, 3, 4 to get your correct answer. तो एक algebraic equation है, इसमें x का values भी given है, राइट? मॉडुलस भी है, और इसका हमें मैक्सिमम पॉसिबल आंसर, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कैलकुलेट करना है। ओके, सो व्हाट कैन बी द पॉसिबल अप्रोच? क्या लॉजिक लगा सकते हैं, क्या मेथड ले सकते हैं? यू कैन टेल मी इन द चैट बॉक्स, और अदर वे यू कैन जस्ट रेज योर हैंड टू स्पीक आउट। यस, so Shashank, how is your answer? Can you explain your logic? Yes, sir, can you hear me? Yes, yes, Shashank. Since it is asking the maximum value, I thought I'd use this x is less than or equal to 4. This will be the maximum value. And I just substituted that in the equation and I got this answer. Okay. So Shashank, you're saying that because the range of x is from -1 to 4 and x is having a maximum value as 4, so you're putting x as 4 in this and getting our answer as fourth option 18, right? Yes, sir. Okay. So Shashank, can you do one thing for me? Just put a -1 in this equation and tell me what is the value you're getting here. It's the same. Is the same, right? Yeah. Why? Because this is a quadratic equation, right? 30 plus 9x minus 3x square, right? And quadratic equation is having parabola, the U-shaped structure, right? Parabola. So this is having a equal answers, equal values on -1 as well as 4, right? Okay. So some other person wants to give me some logic, some answer for this. Hello, sir. Yes, yes, Sir, Prashant. for x is equal to 1, the value of this equation comes out to 36. So that means that the answer has to be 36 or greater, which is correct for only one option, which is option number 2. So what to do? I should check for all the values in the given range, or what to do? So we can check for 2 or 3 values. Maybe I checked for -1, 4, 0, and 1, sir. Okay, okay, okay. And Neha, what is your approach? Hello. Hello, yes, Neha. Sir, first I checked by putting x equals to 0.
then I will get 30, and first and fourth option is less than 30, so both will be eliminated, and when I'm putting x equals to 1, then I will get 36. So second option will be correct. तो आपने ना ये वैल्यूज को कैसे पिन पॉइंट किया कि मेरे को 0 ही लेना है या 1 लेना है या 2 लेना है? Like 0, we can get immediately the answer, like nothing to do with that. And after that, I was just checking by increasing 1. Okay. Okay. Now, in algebra, there are multiple ways, right? If I go with the normal approach, so this is a quadratic equation, है ना? Now, अब जिन लोगों ने 11th 12th में मैथ्स लिया है, जिनके पास हायर मैथमेटिक्स है, तो उनके दिमाग में आ रहा होगा कि हम इसको ना डिफरेंशिएट कर देते हैं, फर्स्ट डिग्री डिफरेंशिएशन, सेकंड डिग्री डिफरेंशिएशन कर देते हैं, एंड देन उससे हमें आंसर आ जाएगा. बट देखो डिफरेंशिएट करोगे तब भी यस यस हमारे सेम डिफरेंशिएट करोगे. सो अगर हम डिफरेंशिएट कर देते हैं तब भी उसमें हमें ना कैलकुलेशन करना होगा, 2-3 लाइन पर राइटिंग कैलकुलेशन वो सब करना है, राइट? आई शुड अवॉइड ऑल दीज थिंग्स बिकॉज अगर मेरा आंसर नॉर्मल आ रहा है तो फिर सब करने की जरूरत ही नहीं. ओके. नाउ सेकंड थिंग, आपने कई लोगों के माइंड में आया होगा कि अरे ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका पैराबोला निकाल लेते हैं और इसका डायग्राम बना लेते हैं, देख लेंगे कि लोएस्ट वैल्यू कौन सी आ रही है या मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आ रही है, कहाँ पे जा रहा है पैराबोला, तो हमें पता चल जाएगा कि क्या होगा, है ना? बट उसमें डायग्राम बनाना और सब करना वो भी बड़ा टाइडी वर्क है ना? ना अब शॉर्टकट पे बात करते हैं, उसमें क्या करें? एल्जेब्रा में 3 नंबर्स हैं एंड दीज नंबर्स आर कॉल्ड एज मैजिकल नंबर्स, है ना? और ये नंबर्स क्या है? दिस इज -1, 0 एंड प्लस, है ना? ये मैजिकल नंबर्स कहलाते हैं एल्जेब्रा के लिए. तो अगर आपके पास में कोई भी इक्वेशन है, कुछ इस तरह के वैल्यूज निकाल रहे हैं, तो पहले इनको पुट करके देख लो कि ये आपके रेंज में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, किसी गिवन रेंज में. अगर उसमें है तो पहले इनको चेक करो, है ना? तो इनको चेक कर दे तो मेरा आंसर यहाँ पे मिल जाता है ना. एक तो ये तरीका. दूसरा तरीका क्या है, इसमें हमें करना क्या है? मैक्सिमाइज करना है, जो एक्सप्रेशन है उसको मैक्सिमाइज करना है. मॉडुलस लगा हुआ है तो ये तो पता है कि आंसर पॉजिटिव ही आएगा बिकॉज ओपन करेंगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा. 30 प्लस 9x माइनस 3x² एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अब इसमें ये ध्यान से देखो आप कि जो 30 एंड 9x है ये दो टर्म तो पॉजिटिव है ना, एंड 3x² ये वाला टर्म नेगेटिव है. और आपको क्या करना है? ओवरऑल एक्सप्रेशन को मैक्सिमाइज करना है. ठीक है. अब थोड़ा सा ना लॉजिकल देखो, मैथमेटिक्स को हम हटा देते हैं, हम ना लॉजिकल देखते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं. एक कुछ पॉजिटिव है, एक कुछ नेगेटिव है, और मेरे को मैक्सिमाइज करना है. तो क्या करें? पॉजिटिव को बढ़ाते चले जाएं, इंक्रीज करते चले जाएं, और नेगेटिव को कम करते चले जाएं, तो ओवरऑल एक्सप्रेशन मैक्सिमाइज हो जाएगा, है ना? ये तो बहुत सिंपल चीज है. तो इसमें हम क्या करते हैं, ये जो पॉजिटिव वाला पार्ट है ना, इसको तो हम इंक्रीज कर देते हैं, ठीक, और ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है इसको डिक्रीज कर देते हैं. डन. ये तो इजीली हो जाएगा काम. अब इसके लिए जो रेंज गिवन है, इफ आई टेक x इज इक्वल टू 0, ठीक है, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, सब कुछ कट गया, खत्म हो गया, तो आपको कितना एक्सप्रेशन मिलता है? 30. ठीक है, तो ये ऑप्शन कट गया, है ना? और 93/4 अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? 22, है ना? तो ये भी ऑप्शन कट गया. सो जस्ट सिंपल कैलकुलेशन में आपके दो ऑप्शन तो कैंसल आउट हो गए. ठीक है. अब और देखते हैं. तो इफ आई टेक x इज इक्वल टू 1 प्लस 1, है ना, पुट किया तो ये कितना आ जाता है? 36. ना? तो ये वाला ऑप्शन भी कट गया. और इसको अगर हम देखें सेकेंड ऑप्शन को, तो सेकेंड ऑप्शन मेरा कितना है? दिस इज 36.7. दिस इज माई राइट आंसर. Right? So this way I can identify my answer, I can calculate my answer easily and quickly. Right?
गेटिंग दिस? सो और ये कब होगा? जब हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, अपने क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे, रिवीजन करेंगे, राइट? गेटिंग दिस? ओके. एक्सक्यूज मी सर, सर Yes. हमने 30 को इसलिए एलिमिनेट किया क्योंकि 36 बड़ी वैल्यू है, मतलब हम मैक्सिमम मैक्सिमाइज करना है इसलिए। यस यस कुशाक, बिकॉज इसमें बोला है ना मेरे को हम कि इस मैक्सिमाइज करने के एक्सप्रेशन लिए। का मैक्सिमम वैल्यू कितना है. तो अगर मैंने x को 1 रख दिया तो मेरे को एक्सप्रेशन से कितना मिलता है? 36, which is 36। greater than 30, है ना? तो मेरा थर्ड ऑप्शन भी कैंसिल हो गया, एक ही बचता है, दैट इज सेकंड ऑप्शन. एंड अगर हमको मिनिमम बोला जाता तो हम सबसे छोटी वैल्यू देखते हाँ, आफ्टर तो सॉल्विंग। सबसे छोटे लेते, तो सबसे छोटा लेते, है ना? ओके सर, ओके. थैंक यू। ओके, थैंक यू. ओके, कम टू दिस वन. यस, देखो एल्जेब्रा ना स्कूल में भी हमें बड़ा जो है फियरसम लगता था, डराने वाली चीज लगती थी. और मे बी आई डोंट नो, बट काफी लोग जो है यहाँ पे भी एग्जाम में टैग्स है, टैक्टीज एनालिसिस, जो भी सारे एग्जाम्स हैं, इनमें बोलते हैं कि अलजेब्रा बड़ा ही टफ होता है, बड़ा ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं, एंड सॉल्व करने में भी बड़ा टाइम कंज्यूम है ना. बट आई सजेस्ट कि अगर जो डराने वाली चीज है, तो जब तक उसको फेस नहीं करोगे तब तक वो डर बना रहेगा, है ना. तो हमें उससे भागना नहीं है, उससे दूर नहीं जाना है, उसके और पास में आना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, रिवीजन करना है ना. और ये जो प्रॉब्लम है, ये जो डर है ना, ये सब खत्म हो जाएगा. ओके, सो टेल मी फॉर दिस. ओके खुशबू, ओके. हेलो धिमाए, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? Yes, sir. सो व्हाट्स योर I आंसर और मे बी द अप्रोच? I have not solved, but I think we have to use the formula over here that if x plus y plus z equal to 0, then like there's a formula like then x cube plus y cube plus z cube equal to xy plus yz or something. I'm not remembering the exact formula. I think we have to use here the denominator will be xyz and numerator will be x cube plus y cube plus z cube. By that we can solve it. I'm Okay, trying to remember but the see, formula. if you're saying that if I do not know the formula, so my answer is, if I do not know the formula, I cannot solve this because I do not know this. But what to do? I told you there are three magical numbers in the algebra: -1, 0, and +1. Right? And if I look for this, so this is saying if this is something and then find the value of this given that x, y, z is not equal to 0. So see, the key lie here, the clue lies here. This thing, x into y into z is not equal to 0. अगर इन तीन वेरिएबल का प्रोडक्ट जीरो नहीं है, ठीक है, और मेरे को ये भी नहीं बोला है कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंटीजर है, फ्रैक्शन है, रियल है, रेशनल है ना, नेचुरल है, किस तरह के नंबर है, कुछ भी नहीं गिवन है, राइट. तो अब मेरा चॉइस है कि मैं इनको कैसे कंसीडर करूं. और जो मेरा चॉइस अगर है, तो मैं तो हमेशा इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में ही लूंगा. वाई टू इंक्रीज द डिफिकल्टी फॉर मी, राइट. ये तो सिंपल लॉजिक है ना. एक्सक्यूज तो मी सर, अब हाँ, सर इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा अगर हम एक्स स्क्वायर में ए बी माइनस ए सी की वैल्यू रखें का होल स्क्वायर करें एंड वाई स्क्वायर में बी सी माइनस बी ए का होल स्क्वायर करें. सर ऐसे करने से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा. तो वो तो करना ही नहीं है ना. ओके. वही तो मैं बोल रहा हूँ कि वो तो नहीं करना है. अगर वो ओके. करेंगे तो फिर हमारा जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो हम इतना
मेहनत कर रहे हैं उस सब का फायदा ही क्या हुआ फिर, है ना। फिर तो जो है स्कूल में हमने ये सब सीखा ही है कि वैल्यूज को प्लेस कर दो, लिख दो और फिर उसको सॉल्व करो। एक एक दो दो पेज में आंसर आते थे स्कूल में, है ना। तो वो सब तो नहीं करना है ना, ये तो हम सीख रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो मैंने क्या बोला कि वाई टू एड अप द डिफिकल्टी फॉर मी, है ना। ये तो एक जनरल टेंडेंसी है कि आप हर चीज को सिंप्लीफाई करते हो, है ना, और वो यहाँ भी करना है। तो अगर आपको बोला है कि x इंटू वाई इंटू जेड अगर 0 के बराबर नहीं है तो क्या हो सकता है, सिंपल नंबर ले लो। यू कैन टेक x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू +1, इजी, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन हो जाएंगे, है ना। तो अगर मैंने ये लिया, इस एक्सप्रेशन में जरा पुट करो और जल्दी से मेरे को बताओ कि कौन सा ऑप्शन आता है। कुशांग्र, खुशबू, जस्ट रिकैलकुलेट। हार्दिक, अरे अरे हार्दिक ये क्या कर रहे हो, x इज इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इज इक्वल टू +1, राइट हार्दिक। तो आप मेरे को बताओ कि कौन सा ऑप्शन आ गया आपका। अरे शुभम, अभी भी एरर हो रही है, ये तो ऐसा मत करो। यस सर कुशांग, तीनों वैल्यू को एक ही नंबर ले सकते हैं, अगर उसमें लिखा होगा डिफरेंट नंबर है तो ही डिफरेंट लेना है, वरना एक भी ले सकते हाँ, हैं। तो अगर डिफरेंट लिखा ही नहीं, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिया ना। यहाँ पे जो है सिमिलर है, डिफरेंट है नहीं दिया, तो मैं डिफरेंट को लूँ, मैं तो इजी करूंगा, सिमिलर लूंगा। ओके सर। अगर मेरे को नहीं दिया कि नेगेटिव है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लूँ, पॉजिटिव कैलकुलेशन इजी पड़ते हैं, माइनस के साथ तो कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो जाते हैं। तो आपने अगर x इज इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड लिया, इसको सिंप्लीफाई किया, तो आपको ऑप्शन कौन सा मिल गया, थर्ड ऑप्शन, 3 डिवाइडेड बाई एबीसी, दिस इज योर आंसर। एंड हार्डली हाउ मच, यस शुभम, नाउ दिस इज राइट, हार्दिक यस करेक्ट। एंड कितने देर लगा, मे बी 10 सेकेंड्स, राइट। और अगर आप इसमें वैल्यूज रखोगे, कैलकुलेट करोगे, एक पेज लंबा आंसर बन जाएगा और उसके बाद भी कंफर्म नहीं है कि वो सही आएगा या गलत आएगा, राइट। बिकॉज इतना बड़ा कैलकुलेशन एग्जाम में बैठ के करना पॉसिबल नहीं। सर जिसमें से वेरिएबल दिए होते हैं उसमें और नंबर नहीं होता कोई, तो उसमें हम लोग ये वैल्यू डालने वाली अप्रोच लगा सकते हैं सारे टाइप के क्वेश्चंस में। यही लगाना चाहिए, यही लगाना चाहिए। अगर जैसे किसी में नंबर दिया हो तो ये नहीं लगा सकते, जैसे कि तब इक्वल तो टू। फिर नंबर दिए तो नंबर ही दिए, है ना, फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता। ओके। और सुभाषी, अगर एक्चुअल वैल्यू जैसे अगर सपोज इन्होंने बोला कि डिफरेंट है ना, तो डिफरेंट ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, सिंपल इजी वैल्यूज ले लो, है ना। तो वो डिपेंड करता है कि यही मैंने बोला अभी कि जो शॉर्टकट्स है ना या जो फास्टर मेथड्स हैं वो क्वेश्चन डिपेंडेंट होते हैं, है ना। उसमें ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बोला कि देखो ये एक तरीका है, अब आपने 50 क्वेश्चन पे अप्लाई कर दिया, वो तो उनमें हो सकता है कि 2-3 में लग जाए, बट वो क्वेश्चन डिपेंडेंट होते हैं, राइट। यस शुभम, यस। तो एल्जेब्रा के जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे अभी आपने एग्जाम्पल देखा, पिछले वाला भी देखा, राइट, जिसमें हमने मैक्सिमम वैल्यू निकाला, ये वाला भी एग्जाम्पल देखा। सो मैक्सिमम क्वेश्चन जो एग्जाम में रहते हैं वो इन मैजिकल नंबर से सॉल्व हो जाते हैं, दैट इज -1, 0 एंड +1। बट वो भी सॉल्व करने में ना मेरे को थोड़ा सा कैलकुलेशन का ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। ऐसा ना हो कि हम थोड़ा सा जल्दी सॉल्व करें और आंसर को रॉन्ग कैलकुलेट कर दें, राइट। So, what is my suggestion to everyone that revise the things, है ना। एंड जो रिवीजन कर रहे हैं उसमें आप टेस्ट भी करो। एडुशास्त्रा ऑनलाइन पोर्टल पे टेस्ट अपलोडेड हैं, डिफरेंट टॉपिक टेस्ट हैं, फुल लेंथ टेस्ट हैं, है ना। नाउ दिस इज अ गुड टाइम कि आप एटलीस्ट एक कंप्लीट फुल लेंथ टेस्ट अटेम्प्ट करो, एवरी 10 डेज, एवरी 15 डेज, हर 10 से 15 दिन पे कंप्लीट फुल लेंथ टेस्ट अटेम्प्ट करना है ना। और टॉपिक टेस्ट तो हर रोज ही करना है, किसी भी टॉपिक का करो, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, एनीथिंग, बट स्टार्ट डूइंग द टेस्ट, राइट। बिकॉज नाउ दिस इज ऑलमोस्ट
September is over, right? And we have October and then November, right? So this is a very high time to start mock test. Okay, done. So So how with many full length mocks we should take before CAT, full length CAT mocks? at least 10, Okay. at least 10. Huh? So with this, we are winding up the session for today, but I'm leaving with you for this idea that we should revise regularly and we should test regularly, right? So take care. Good night. Good night. Take care. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you.